sex determination, and the overall psychological as well as the occupational aspects of the Prakriti. Here I want to take up one more important point, wherein the Prakriti, which is which can be a tool to guide the individual, which can be related to the occupational and the educational purpose. So we can guide the individual which suits for his or her concepts related to the suitable occupation and suitable uh, education which he can enjoy in his further career. So career guidance can one of the related things. So here one of the important example is Karna, wherein the lobule of the Karna, which denotes Dirghayu of the individual. Then here also Karna Vedan Samskar is also described. Then in the era of where the warfares were there, then the Marma Sharir was playing an important role, protecting the vital points or attacking on the vital points. Both ways the rules and regulations, when it presented as a sport like Gada Yuddha, between the Yuddha of Bhima and Duryodhan, where some rules you know uh, were sorted out and seems to be not followed. So there are things which are been said and in reference to the Marma aspects. So I have already elaborated about the Bija concepts, wherein the genetical evidence and the genome characters are followed through the families. So here I want to point out that when we consider there is a reference that Artavam Agneyam. So I have come across a YouTube video where the hair was taken up for the medico-legal evidence, and it was studied. So here the hair Artavam Agneyam. So here the relation between the maternal gene and the mitochondria found in the hair is directly correlated. It comes from the genes from the maternal side. So many students come to us and ask for this topic, whether we can take the concept of Artavam Agneyam as a research topic. So they come and tell us about hairs. So the actual factor resides in the mitochondria. So here is also one of the example which relates to the Sharir Rachana. So these are the historical references from the globe, but we will not go through it. But we can see that in year 1247, where the Song dynasty from the China also reflects the laws and the punishments. Then in the British era, the Britishers appointed the coroners from the royal family. The forensic autopsies and uh, the examples from the Julius Caesar and the examples from the 1500 AD. All these are examples which we can see, which mentions about the autopsies and the traumatic injuries and the examinations of the individuals, which can be seen during these eras. So while advising the medicine to a patient, these legal methods were adopted,
and while examining the natural and unnatural death and the cause of death which is related to it. So all the forensic later on by the American Board of Pathology, some investigation methods were established, and then the medico-legal death investigations (ABMDI) was formed in 1998, and today the medico-legal death investigations are then categorized through the part of the forensic pathology. So forensic pathologists play an important role in the analysis of medico-legal death, and medico-legal death investigation covers many of the points which relates to the uh, procedures which are mentioned in Ayurvedic eras, as well as the evidences which are related to the body parts, and the uh, evidences which are found. So whenever uh, s- uh, we we go for the identification of the dead body, or whenever we come across some cases, I would like to mention one case which my father uh, told me. So I would like to mention this, that my father, who was an anatomist, and he used to get calls from the court, and many of the examples he told me. One of the example was related to a hotel which was serving non-veg in. I would. I will not tell the name of the city, but the place is well known for the tourist. So naturally, the tourist used to go there, and because of the taste which had for the non-veg quality of the food, the people used to have the food from the hotel. And somewhere around one of the person, he went there, and he happened to be a doctor. uh, Naturally, my father was not one of the person I am talking about. So that doctor, when the dish came into his plate, he observed that the little finger, like you know, that one of the non-veg piece was like the little finger with the nail in it, and he he saw that he it might be a human flesh. So again he wanted to investigate that. So he took that sample, and again he ordered for the uh, 1 kg parcel. He took it to the took that sample with the bill. He examined it, and he found that the hotel was serving a mixed food of human flesh, dog, monkeys, and goat. So this is the case which stands where the anthropologist and the evidence of human flesh. There are cases where the human flesh is supplied, you know. So this is the case which was told, or my father used to go for the identification of bones which were found. So he was presenting as an anatomist, and his expert opinion on the different kind of bones which were found, whether it was human, it was non-human, and so on and so on. So some of the congenital features which are important when we identify the dead body, where we come across the cleft palate, the dextrocardia, that means the uh, normal position of the heart is completely reversed. The various habits and habitats of the individual are to be correlated uh, with the dead body. That is the person's occupation, what he used to wear, where he resides, and those things are also to be correlated.
then the posture and the gait due to the malformation, like congenital things can be correlated, say kyphosis or malformations, absence of a particular bone. All these kind of investigation, all these kind of anatomical facts are important in relation to the uh, findings in anatomy. So the presence of extra finger, that is polydactyly, uh, pres- uh, uh, Hrithik Roshan, as we all know, as one of the examples. There are moles or keloids and some other, til hote hain. So all these are the congenital birthmarks, which are mentioned in the driving license or in insurance policies, wherein the uh, findings will become important uh, if the body is found somewhere in the public places, then the identification of the body becomes easy after accidents or so, or in the insurance. So there are some acquired signs also which the relative can mention. So some of the acquired signs are the surgical marks or the surgeries which took place. The tattoos. There is a growing, the tattoos are growing today. Some birthmarks and the fractures. So these are the acquired signs which can be uh, found in the identification of the unidentified dead bodies. So the other aspect is one of the important aspect of Anatomy Act, which is to be discussed. So Anatomy Act, the 1949. So there are some progressions in the Anatomy Act. So Anatomy Act states it is state-wise different for different states, but the government has published such act, and the act regulates the use of the dead bodies and the transformation of the dead bodies, and to be used only for uh, uh, the study of the medicinal purpose. In India, Anatomy Act was established in 1948, and in Maharashtra, the Anatomy Act was adopted in the Bombay Act as in 1949, which says that the unclaimed dead bodies uh, can be used in the jurisdiction of the, say, police station or uh, the periphery of the police station by the medical college. So it was restricted to be used in the periphery. But Delhi Anatomy Act, which was then passed in 1953, uh, which emphasized on to passing on the dead bodies to other medical institutes. So the boundaries became uh, expanded. So these medical institutes and the disposal of the dead bodies. So first the use of the dead bodies and to the disposable of the dead bodies. Altogether, these rule was further enhanced. Excuse me. Furthermore, the Punjab state again introduced in 1963, where it stated that the possession of the dead bodies from the hospitals, prison, and public places can also be taken up where the dead bodies which are unidentified, which stays more than 24 days or up to 1 year after the preservation in hospitals, they can be taken up by the medical authorities or medical institutes for further studies. Then Mysore and Karnataka, these states also, you know, enhanced the laws
and Acts of Anatomy, which says that the unclaimed dead bodies were to be used and to be taken up for the medical study. So the other part related to the growing demand of the dead bodies. So again, a rule was taken up for the medical dead body donation. So again, the donor can donate his body from the hospital, from his home, or with the certificate which was given to the medical colleges. So he can directly and indirectly, uh, uh, donate his body and body parts also. So here we'll talk about the body parts also, like the different body parts which can be taken up after his death. So there is the procedure by which the dead body donation as well as the other parameters of the Anatomy Act can be followed. So here we can see that the if we want to claim the bodies, then the donation of the body if has to be done by the self declaration, or if the relative is willing to donate the body. Some documentations are important, and these documentation will be helpful if some new faculty, if they have joined, or some PG students who have joined. We used to follow all these procedures when we were doing our PG. So, 3 to 4 documents are very important. First is the death certificate from the RMP doctor or the family doctor, where he issues the death certificate as the cause, say, natural death, plus the time of the death before you receive the dead body from home or by donation. It is important to follow all the laws or the restrictions which are given by Acharya Sushruta. Uh, the death should not be, the dead body should not be over 90 years. The death should not have happened uh, before 8 or 6 hours, because naturally the body is going to have the rigor mortis, and it also becomes difficult to find the vessels, and it becomes rather difficult to embalm the body. So as early as possible, the relative has to inform about the death. He has to take up all the certificates related to the cause of death and the registration of the death certificate in municipal corporation. So these corporation also issues one form wherein the dead body has to be taken up to the mortuary. So that form indicates whether the body is to be burnt or buried or taken up for the further studies and to be donated in the medical college. So that form has to be uh, you know taken up to the police station nearby, which comes into the jurisdiction, wherein the mention of where we have to mention about uh, the uh, the particular number of the dead body, the number of the certificate, and there we have to mention about that this particular body is to be taken up for the medical study in this particular college, and further which can be disposed of later on in this and this premises, or this in this jurisdiction. So we have to take the permissions from the police authorities as well as the municipal corporation. So furthermore, for disposable of the organs or parts, we have to follow the BMW laws which have been put forth. So all the disposables have to be
in the anatomical waste yellow bag, and then only we have to dispose of, if we have to talk about the parts which are coming up from the dissection hall. So these are the references which are available. So we have talked about the organ donation, wherein the transport of the organ donation or the live, or the if we have to transport the liver or transplant the liver, rules and regulations are important. So the next important part which comes as the bone age. So uh, before going through it, I think I will have to ask some of the audience whether I'm audible. Is this the lecture going on smoothly? Is it interesting? I just want a few comments, because I'm just presenting. Yes, yes, sir. Your Yes. lecture is audible. It is going smoothly. Okay. Everything Okay. is okay, Thank sir. you, sir. So this is one of the important part, because I wanted the attention of the individuals, because up to 25 years, uh, plus or minus 2 years, the age of the ossifications get complete, and the ossification is one of the most important things by which we can determine the age of the individual and the gender of the individual. So teeth plays an important part. Various bones like femur, pelvis, cranium, mandible, and sternum, and clavicle are the bones which are important in relation to the anatomy, anatomist. So, which can play a role in the forensic establishment of the age of the individual. So, again, the gender of the individual also. Again, the height and the weight of the body pound can be judged. There are so many studies which have been done. Then, say for example, if the height of the femur is so and so, what can be the overall height of the individual? And in Ayurveda, ayam and vistar of the total individual is also mentioned, 84 angulis, and so these are the examples. So there are some of the findings which can be related to the age of the bone, as well as the characteristic findings like the miscellaneous features which are found in relation to the dead body, like the details of the individuals, where he was working, what was the occupation, sorry, the uh, economic status of the individual, the travel status of the individual, and so uh, features which can be found in relation to the uh, bone, wherein the radiological examination which are needed for the estimation of the ossification, wherein the pad or the gap between the bones or the cartilage or the joints are being studied. The center of ossification in bone, it starts from the second week of the intrauterine life, and which starts from the 806 centers in the 11th week. At the birth, the centers seem to be 450, and at the age of 20, when the uh, bone is ossified, the 206 bones we see. So here are the examples, like clavicle, which starts with the fifth or sixth week, then the sternal end, which fuses at 15 to 17th of the age, and it completely fuses up to the 20th or 22nd year. So there are charts which can be studied for from the forensic experts, wherein the anatomist can give their opinion related to the age of the bone in relation to the ossification and its ossification centers, like the humerus, radius, ulna. So if ever particular
charts from me, or you can see the YouTube link and you can copy the slides if you want to. So this ossification is itself a detailed topic which we are not going to uh, see. So these are various centers which can be seen in the radiological aspect, which are important through the forensic findings. So femur also plays an important role. The neck of the femur, the head of the femur, the overall length of the femur, which also plays an important role in defining the gender as well as the age of the individual. So there are all these bones have their different age of ossification, which can be seen here. So at the with a particular formula, the person or the forensic expert and the anatomist can have the calculation of the age of the individual, finding the radiological evidences. The carpal bones, which are seen, you can see that the uh, intrauterine life and uh, the age, wherein from the fourth month to various age up to the 9 years, these hand bones, or the carpal bones plays an important role in the establishment of the age of the child. Then are determined for the establishment of the age and the gender of the individual. And after 25 years, especially, then there is a question where decided, or the age of the old person can be decided. So as we all know that Shiryatita Shariram, so the factors which are happening in the mandible, uh, there are some changes because of the overuse of the teeth, overuse of the uh, uh, the uh, cervical bones. Then the uh, sutures also becomes permanent, and the fusion happens at the later ages like 40, 50, 60. So this cranium becomes an important bone for the determination of age and gender. Then pelvis is an important bone where we can find the difference between the male and the female pelvis, which uh, where the female and the male uh, bone can be the pelvis can be studied in differentiating the gender. So now the interesting part of the evidence is whenever some mystery we see in the movies. One of the famous movie which we see that Aisha Mahajan and the recent murder cases where we see that the biological evidence plays an important role, like the blood stains, the fingerprints, the DNA of the individual, the hair, the semen, the sputum, the nails of the individual, clothes and accessories, the footmarks, the face, and the face reading also, where the uh, persons involved the uh, in the crime scene are all investigated, and there are forensic experts which all go through these evidences and do their investigation. So major body parts are nail, hair, sputum, semen, even the DNA of the individual, and the fingerprints. Okay, and
the most which is studies are the blood stains of the individual, which are often collected from the crime scene. So a law which is a POXO law, then uh, you know can be decided for a juvenile punishment whether the person is above 18 or not. Then this battered baby syndrome is out of this POSCO law, wherein the child labor or a person who is beating up that child, or homicidal uh, cases wherein the uh, child is abused, so he has been hit or been tortured. So battered baby syndrome is one of the syndrome which is studied while the investigation for such cases, juvenile cases. The other cases which comes under POSCO are related to the rape, the divorce cases, or underage marriage, the genital inabilities, impotencies, abortions, detection of fetal sex, slow poisoning or homicidals, or stillbirth in from the birth from a underage child. So these POSCO Act can be an important medico-legal law. Then there is one movie, Ankur Arora murder case, where the medical negligence is focused, and consumer protection was also in feature. This is a very catchy movie wherein the role of the doctor and his business, uh, his ethics, and everything is been shown in a very dramatical way. So there are times when we used to hear about the medical negligence in the time of COVID-19. And here comes to the last part, wherein we can discuss about various cases which you might have mentioned in the chat box. So, taking up the summaries or summary of this lecture, we have seen the definition, significance, the historical evidence, and various other aspects of the anatomical and the medico-legal and Ayurveda aspects of the related topic today, the modern references as well as the case studies. So we cannot forget one particular movie, which is Damini, which all might have seen who are of my age, or because it was a very famous movie related to the investigation of rape, and some other movies which I want to name out, like Ek Ruka Hua Faisla, or I would name much more movies, and let us see how many people have uh, mentioned about their. So that's all from my side. I was not well, and because of that, my voice and you know, so I am sorry about the disturbances, which I have not. I think I have touched many of the topics which are related to the medical aspects and the Sharir Rachana aspects, as well as the role of the anatomist. So here's all from my side. I rest my case, and that's all, my lord. Thank you. Thank you, Ayurved Vyaspit, and the forum, which has given me a chance to present my topic in front of you. Um, and thanking all the uh, team members of Vishwa Ayurved Parishad Rachana Sharir Sambhasha. I thank uh,
from all my heart related to all the seniors and the participants who have uh, listened to my lecture. Thank you once again. Over to you, sir. I'm closing Thank you, sir. my Thank share you. button. Sir, thank you so much. Uh, it was very nice lecture, sir. Thank you, sir. Uh, Let us see anybody who has reacted on the chat box. नहीं, एक बहुत ही एक नया विषय रहा सर हम सभी के लिए, क्योंकि इसमें आपने जो सभी एस्पेक्ट्स है रचना शरीर की जो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के संबंध में, इस राइट फ्रॉम डेफिनेशन है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपने बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं इस विषय को, एविडेंसेस फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारी जो उपलब्ध ग्रंथ है या बाकी भी है, इसमें आपने उस पार्ट को भी हाईलाइट किया है। इसके अलावा आयुर्वेद और मेडिको-लीगल एस्पेक्ट्स इसमें जो है शव विच्छेदन से रिलेटेड हो, या जो अन्य आपने केस स्टडीज भी बताई है कि कहाँ पर क्या हुआ था। ये नागपुर की घटना जो आपने बताई वो मैंने भी सुनी है सर, वो और सत्य घटना है वो। इसी के अलावा एनाटॉमिकल इम्पोर्टेंस भी बहुत सारा आपने बताई, जैसे कि ऑसिफिकेशन है, जो भी खासकर स्केलेटल एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छे से आपने इलाबोरेट किया इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट। बाद में मॉडर्न रेफरेंसेस भी बताए। मीन्स ओवरऑल जितना भी इस विषय से संबंधित है कि जो एक एनाटॉमिस्ट का फॉरेंसिक्स में क्या रोल हो सकता है, तो इस विषय को आपने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और बहुत ही ऑल डायमेंशन और ऑल पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए सभी को आपने किया है सर। तो आपका सर बहुत बहुत आभार। हमारी पूरी जो टीम है विश्व आयुर्वेद परिषद की, हमारे कन्वेनर्स है, कोऑर्डिनेटर्स है, रीजनल कोऑर्डिनेटर्स है, सभी की तरफ से सर, और हमारी जो नेशनल बॉडी है उन सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है सर, आपका कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका सर धन्यवाद भी मैं ये कर रहा हूँ सर। तो इसी कार्यक्रम की कड़ी को थैंक यू सर। हाँ आगे बढ़ाते हुए सर दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किए हैं, आई थिंक क्वेश्चन होंगे। डॉक्टर आशुतोष यादव सर, हाँ आप कुछ पूछना चाहते हो? आंसर मिल गया सर। अच्छा जी थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव मैम भी हमारी जो कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने भी शायद हैंड रेज किया है। मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव मैम। हमारे साथ डॉक्टर गौरव सावरकर जी भी है जो वर्धा से है। सर आपका स्वागत है। सर कुछ बोलना चाहेंगे सर आज? ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं होने से आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर इस संभाषा परिषद के डॉक्टर अमल देशपांडे जी को आज के कार्यक्रम का वह आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा हमारे आज के जो मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने हमें फॉरेंसिक मेडिसिन और एनाटॉमी का जो रिलेशन बताया। बेसिकली हम ये बहुत बार पढ़ाते भी हैं बच्चों को, और अभी एनसीआरएम के सिलेबस में ये जो नया टॉपिक आया है कि हम एनाटॉमी एक्ट मीन्स, पहले जब हम डिसेक्शन लेते थे तो थोड़ा सा बताते थे, लेकिन अभी उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि हमें यूजी लेवल को भी उन्होंने एनाटॉमी एक्ट वगैरह जो बताना है, तो उसके बारे में भी सर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया।
और बाकी भी जो फील्ड्स है जो हम बहुत बार यूजी को नहीं पर पीजी को हम पढ़ा सकते हैं। मीन्स जो फॉरेंसिक्स के जो आपने सर बताए वो हम पीजी को हम उसको इलाबरेट कर सकते हैं कि हम नहीं, आपको ये भी हमें ये देखना चाहिए एनाटॉमी के बारे में। जब सिर्फ हम एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीजें नहीं पढ़ते जो आज आपने हमें बताई, या हम बहुत बार हम पीजी को भी ये नहीं पढ़ाते। तो एज अ पीजी टीचर भी हमें ये बहुत चीजें काम में आने वाली है। तो आपका विशेष रूप से आभार है सर। जो आपने सब्जेक्ट चुना वो भी अ, बहुत बार इस सब्जेक्ट में कहीं से सुनने को नहीं मिलता। जिस सब्जेक्ट को आपने चुना और जिस सब्जेक्ट को आपने इतने अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया, तो हम इसके लिए विशेष रूप से आभारी है सर, विश्व आयुर्वेद परिषद की तरफ से और रचना शारीर समाशा कमेटी की ओर से। अमोल सर। आगे भी ऐसे ही। यस सर। हाँ, एक्चुअली मैं अनम्यूट करने गया और लेफ्ट हो गया था। हाँ सर को एक सर। जस्ट लेक्चर मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा सर का लेक्चर। सर को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आयुर्वेद विश्व परिषद को भी बहुत बहुत बधाई। और नहीं, ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स वो सभी आयुर्वेदा फैटर्निटी के लिए लाते हैं। आकाश जी मेश्राम को सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये कंसेप्ट सर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया, अगर और अच्छे रूप से लिखित रूप में अगर आता है आगे, तो इससे और जो शायरी रचना की जो फैटर्निटी है और लाभान्वित होगी, इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, इन द फॉर्म ऑफ कोई हैंडबुक, इन द फॉर्म ऑफ कोई एनी बुक। सो इट्स सजेशन फ्रॉम माय साइड सर, क्योंकि आपका ये व्यस्ततम समय है, बहुत आप व्यस्त रहते हो, तो फिर भी अगर होता है इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, इफ यू पब्लिश, सो ये अच्छा होगा कि जो आयुर्वेद के जो कंसेप्ट है वो अलग ढंग से रचना शारीर के तरफ से आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, Gaurav थैंक यू sir, डॉक्टर। we have already you know pointed out that MSc started in anatomy from NCISM. Yes. So this was the basic idea that some of the applied aspects of anatomy can also be taken up to start a new course like this. Okay sir, thank you. Amo sir, hand over to you. थैंक यू सर। तो होपफुली जैसे सर ने कहा है, हम जल्दी आपका एक आध आर्टिकल या बुक इस टॉपिक पे पब्लिश हुआ देखेंगे और हम उसको और स्टडी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि टॉपिक बहुत नया था सर। मीन्स बहुत बार हम लेक्चर सुनते हैं पर इस टॉपिक के बारे में मीन्स मैंने आज तक बहुत इससे नहीं सुना। तो आज जो आपने बताया वो होपफुली हमारे फ्यूचर के लिए उपयोगी होगा। और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ हम आपको कभी आमंत्रित करेंगे फिर कुछ भी नया टॉपिक के साथ। तो आज के लिए सर आप जो हमारे साथ जुड़े हो आपके बिजी शेड्यूल में, तो हम उसके लिए आपके आभारी है। उसी के साथ जो आज हमारे साथ ऑल ओवर इंडिया से जो फैकल्टी जुड़ी है, ऑलमोस्ट आज भी मुझे इस लास्ट सेशन के जैसे बहुत सारे कॉलेजेस के डीन वाइस डीन फैकल्टी डीन दिखे थे, तो वो भी हमारे साथ निरंतर जुड़े रहते हैं हर लेक्चर्स में। तो आपके द्वारा ऐसा ही सहयोग हमें भविष्य में भी प्राप्त हो ताकि हम और कुछ रचना शारीर में अच्छा कर पाए। हम मीन्स ये हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन है रचना शारीर के सभी फैकल्टीज की, इसलिए हमें रचना शारीर के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कुछ अच्छा करना है। इसलिए आप सभी का सहयोग हमें आगे भी लगेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में और किसी इमिनेंट स्पीकर के साथ मिलेंगे। तब तक मैं विश्व आयुर्वेद परिषद और रचना शारीर संभाषा की तरफ से सभी फैकल्टीज को आभार प्रस्तुत करता हूँ और हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए जुड़ेंगे। आज का लिंक हम यूट्यूब पे लाइव कर रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से वो मैं स्टार्टिंग से नहीं कर पाया, पर मैंने फिर नई लिंक क्रिएट करके फिर उसको लाइव किया है। तो आई थिंक 75% का लेक्चर हमें यूट्यूब पे लाइव मिल सकता है। मैं वो लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो हम वहां से भी कुछ ले पाएंगे। थैंक यू। आई थिंक राकेश शर्मा सर रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। राकेश शर्मा सर, आपको कुछ कहना है? लेफ्ट हो गए थे शायद सर।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शांति मंत्र के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव मैम को। मैम अनम्यूट नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुभा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमोल सर अनम्यूट कर दीजिए आप अपनी तरफ से। मुझे लगता है कि ज्वाइन विथ ऑडियो नहीं किया होगा, इसलिए भी प्रॉब्लम होता है। लेफ्ट होकर शायद उनको फिर से ज्वाइन करना होगा। हेलो, अनुभा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो लेफ्ट होके फिर से ज्वाइन करना होगा सर। सर उनको बता दीजिए लेफ्ट होकर ज्वाइन करें। आप एक बार लेफ्ट होकर वापस ज्वाइन कीजिए। शर्मा सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं? हाँ सर ठीक है। बहुत बढ़िया। एक अलग हट के जो है एक अलग विषय था और बहुत सारी चीजों को आपने कवर किया सर, बहुत सी चीजों को टच किया है और क्योंकि हेलो विषय से जुड़ना बहुत जरूरी है। हेलो बहुत। हाँ हाँ आई एम हाँ अनुवा जी ऑडिबल आवाज आ रही है आपकी आवाज। यू आर ऑडिबल मैम। हेलो आई एम ऑडिबल यस 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 यू आर ऑडिबल मैम। हेलो हाँ हाँ बोलिए आप बोलिए, ऑडिबल है, आपकी आप आवाज आ रही है, ऑडिबल है। बोलिए। ओके सर सॉरी सर फ्रॉम माय साइड सर उस समय आपने कुछ कहा था। मैं सर एक बस मेश्राम सर से पूछना चाह रही थी सर आयुषी जो कांड था मर्डर केस सर उसमें क्या फोरेंसिक डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं रहा? हेलो सर। हाँ यस मैम। सर मैं पूछना चाह रही सर आयुषी केस में सर यही हुआ था कि जो एविडेंसेस थे यस सर उसको पहले उसमें कहते हैं कि जो मेन फॉरेंसिक टीम आने वाली थी उसके पहले यस ही सारे एविडेंसेस जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस थे उनका सत्यानाश हो गया। वेट कर दिए गए। जी, तो उसमें सारे फाइंडिंग्स जो थे और दोनों डॉक्टर्स और थोड़ा सा हटके केस होने की वजह से और इन्वॉल्वमेंट थोड़ी जल्दी ये जो हुआ तो उसकी वजह से केस ट्रांसफर होते गए पुलिस स्टेशंस टू डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसकी वजह से ये जो फैसला है उनका उनका जो स्टोरी है वो एक पैटर्न में नहीं है। तो एनाटॉमिकल एविडेंसेस उनके अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों की तरफ से अलग अलग स्टोरीज आई है। तो उसके ऊपर भी अलग अलग जो स्टोरीज की मूवी है वो भी हमारे सामने उन्होंने रखी है। तो उसमें बहुत सारे एनाटॉमिकल एविडेंसेस है कि जैसे जो वुंड है जो सब कट हुआ गया है तो इनसाइड वुंड जो था वो प्रोफेशनल हाँ शार्प ये सारे जो है फीचर्स ये उसी तरफ इंडिकेट करते हैं कि हाउ द मर्डर हैपेंड और रेलेवेंस क्या है, उसको टूल कौन सा यूज किया गया
तो ये एविडेंसेस है। फिर ब्लड उसके स्टेन्स वॉल के ऊपर उड़े थे, तो उसके अलावा किस किस के और स्टेन्स मिले वहां पर, जैसे पर्टिकुलर जो पहला मर्डर वो जो टेरेस के ऊपर मिला था उसका, और नीचे तो मर्डर करके उसको ऊपर लेके गया या मर्डर वहीं पे टेरेस पे हुआ, तो कितने स्ट्रैंड्स मिले, तो जो सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, तो अलग अलग जो मोडस ऑपरेंडी से रिलेट करके, कॉज ऑफ डेथ से रिलेट करके, अलग अलग जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स दिखाए हैं। सारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी मिलते हैं हमको, ये सारे एनाटॉमिकल फिजिकल एविडेंसेस ही होते हैं। पर एकदम सर एकदम जैसे कंफर्म नहीं हो पाया, इसीलिए आई थिंक कि वो उतना वेवर्ड कर दिया गया सारे एविडेंसेस को स्टार्टिंग में, इसीलिए बहुत सारे कंफ्यूजन होते चले गए। जी जी जी। और एक पर्टिकुलर रिजल्ट पे हम नहीं पहुंच पाए। जी जी जी। ओके सर, ओके सर। सर मेरा पार्ट है, मैं शांति पाठ के लिए आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पद्यानि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब मैं डॉक्टर अनमोल जी को आमंत्रित करती हूँ फॉर फॉर्मल क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम। डॉक्टर सचिन, सॉरी आशुतोष यादव जी ने हैंड रेस किया है, सर जी कुछ कहना चाहते हैं? आशुतोष यादव जी। आशुतोष जी आपको थैंक यू सर, थैंक यू। और मैंने क्वेश्चन करने के लिए किया था, बट आंसर मुझे मिल चुका है। जी जी जी। और इसमें बहुत सारे लोग हमको दिखे, इससे पहले 2-3 बार मैं जुड़ चुका हूँ जी। और उस समय मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बरेली में था। राइट नाउ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट गोवा। बधाई हो सर। बधाई आपको। थैंक यू सर। और इस आयोजन के लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारी टीम का हिस्सा है। Thank you to you also, sir. Sir, and congratulations to join Goa. ओके सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया रहा जी। व्याख्यान करना जरूरी है और कुछ कुछ नया नया हम एक्सप्लोर करते रहे, यही हमारी भावना रहेगी। और मैं ये चाहूंगा कि सभी लोग अपना अपना एक मंतव्य दें कि भाई हम अगली बार किस पे हम कर सकते हैं, या कोई आदमी स्वयं प्रस्तुत करना चाहता हो तो वो भी अपने को जो है उत्साहित कर सकता है कि भाई हाँ। तो हम चाहेंगे कुछ नए विषयों के साथ फिर हम आगे बढ़ें। अगले हर महीने व्याख्यान हमारे निर्धारित है, अगले महीने फिर एक व्याख्यान के साथ हम उपस्थित होंगे। तो अगर कोई लगता है किसी को कोई विशेष तो वो अपना योगदान देना चाहता है तो वो स्वयं आगे बढ़ करके भी अपने को प्रस्तुत कर सकता है और विषय भी प्रस्तुत कर सकता है कि इस विषय पर मैं व्याख्यान देना चाहता हूँ। और इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ हट करके होना चाहिए, ये हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबको प्रणाम सर। बिल्कुल, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम सर। Thank you once again. आपका फॉर्मल एंड करें सर? Yes, सर, क्लोजर करें सर। ओके ओके, थैंक यू। तो सभी की सहमति से आज का जो ये व्याख्यान रहा डॉक्टर आकाशदीप मेश्राम सर का, बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया और सभी ने आपके रिव्यू भी सबके सामने ही प्रस्तुत किए हैं सर। तो मैं पुनः आपका एक आभार व्यक्त करते हुए और सभी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए आज का ये जो कार्यक्रम